तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। यूज द आइडिया। ओके। Describe an arrangement and motion of the particles in the liquid petrol stored in the container. Use your ideas for kinetic particle model of matter. We have two marks questions. तो हम पहला पॉइंट इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि particles are moving randomly. Particles are moving randomly across the liquid. And second point हो जाएगा colliding with with the each other and walls of the container. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि temperature of the gas inside the metal increases. State and explain any change in pressure of the gas of the metal container. So पहला पॉइंट तो ये आएगा, pressure would increase, 8 marks. Next marks, because the kinetic energy of the particles increases, hence increasing rate of collision and resulting in greater pressure. Okay. Describe how thermal energy travels from sun to the petrol inside the metal container. Thermal energy कैसे ट्रांसफर होती है? In form of infrared radiation. radiation and is conducted by The metal container. through conduction. Because solids में कौन सा mode of transfer of energy होता है? Conduction. For fluids वो go for Convection. convection. तो Result इंफ्रारेड रेडिएशन लिखना जरूरी है या रेडिएशन भी लिख सकते हैं? radiation is the same. यानी मेन ट्रांसफर कंडक्शन और कन्वेक्शन से होता है, रेडिएशन से नहीं होता। नहीं, सन से अर्थ तक थ्रू रेडिएशन आ रहा है एंड मेटल से कंडक्ट हो रहा है थ्रू कंडक्शन। दो पैरामीटर्स आएंगे इसमें। वो मेटल कंटेनर है ना? हाँ, और उसने कहा है वहां से यहां तक मेटल तक पहुंचने, तो सन टू अर्थ किस फिनोमेना से आएगा? रेडिएशन। रेडिएशन। और कंडक्शन बाय मेटल किस फॉर्म में होगी? बाय द फिनोमेना ऑफ कंडक्शन। बिकॉज सॉलिड था तो मेटल थ्रू कंडक्शन कंडक्ट करेगा। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2 मार्क्स हैं। फुल प्रॉपर फुल ऑन डेफिनेशन आएगी। द अमाउंट ऑफ heat एनर्जी हीट energy नीडेड required to raise the increase temperature temperature of the body of through by 1 1 degree। फिर उसने बोला है हम लोगों को कि what was next? volume of कि हमें वॉल 0.0 नहीं, कैलकुलेट द मास इन ऑयल हम लोगों को कैलकुलेट करना। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? डेंसिटी टाइम्स अच्छा, वॉल्यूम। उसने हमें डेंसिटी दी हुई है, उसने हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम पहला फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? we'll go for mass is equals to density into volume. Density is given as 910 and volume is given as 0.024, and we're putting into calculator, it's giving me 2.18। 2.2 kilograms. टू सिग्निफिकेंट फिगर्स से आंसर के लिए अब कैलकुलेट एनर्जी करनी थी, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? E is equals to mc डेल्टा टी। m का वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2.2। c की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2000। एंड टेम्परेचर डिफरेंस कितना है हमारे पास?
No, 20 not to so. 180 तो 160 बन जाएगा माइनस करके. Yeah. So by putting it into calculator, we get 7, 1, Seven point 3, 700,000. 4, 5 into 10 raised to power 5 joule. 5. Then power है हमारे पास. power किसकी इक्वल होता है? work done over time Work. और energy over time. एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 7 into 10 raised to power 5 और टाइम उसने हमें दिया था 2 hours 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes का टाइम था. तो 100,000. 7 into 60 हो जाएगा. 7 7 से कैंसिल आउट हो गया तो 1 into 10 raised to power 5 divided by 60 हो जाएगा. And it's giving 1700 watt. 17. ओके. अब उसने बोला है कि shows a metal box in which. Okay, Muneeb, what is the answer to the first part? First part for this question. 3 marks हैं. सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? Particles The particles are tightly packed together. are at fixed positions. Tightly packed together, and Vibrating at they their only position. Vibrating at fixed position. And they इसके don't बाद make contact with arrangement each and other. separation की बात आ जाएगी. separation में हमारे पास हो जाएगा वही जो स्टार्ट में बोल रहे थे. tightly packed. packed together due to strong Strong intermolecular. intermolecular force. I was thinking temperature of the Sir, वैसे block. yeah, Sorry. strong intermolecular forces रखना जरूरी तो नहीं है ना? नहीं, हमारे 3 points complete हो गए. The temperature of the metal block decreases. Describe any change in the motion and separation of the particles. Now, the kinetic energy would reduce. Separation तो approximately same ही रहेगा because उसमें तो कोई change नहीं आया हमारे पास. The particles would move lower. Slightly closer to each other. Yes. Okay, next part क्या है हमारे पास? What do we have for the next one? ये लिखना भूल गया था. अच्छा जी, next है scientist cools the metal block under temperature is close to absolute zero. Describe the motion of the particles. Ayan, what would be the answer to this one? Absolute zero हो गया. What will be the motion of the particle? Do I have Ayan in class? Yes, sir. Would have least vibrations or almost zero भी लिख सकते हैं. फिर हमारे पास क्या आ रहा है? The weight of the metal block is 26 Newton. उसमें हमें weight दिया हुआ है and उसमें हमें area दिया हुआ है. Calculate pressure. Pressure किसकी इक्वल होता है? Force per unit area के. Force is given as 26 and area 42 है into centimeter square हो जाएगा तो 10 raised to power minus 4 हो जाएगा. Zero. Yeah. तो क्या आंसर बनेगा इसका?
6.2 something आ Minus रहा है. 42 -4 should exponent minus 4 is 6190. 6190, तो हम 6200 इसको लिख देते हैं. बट उसे न्यूटन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हमें ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. उसने यूनिट हमें ऑलरेडी लिख 160. के दिया हुआ है. उसकी बेसिस पे हमारे पास आंसर आ रहा है 0.62. 26/42. सॉरी, Yes. नहीं, दैट इज द आंसर. उसके अलावा कुछ भी नहीं है. 0.62 है. फिर उसने नेक्स्ट हमें क्या हम्म, बोला हुआ है? उसने हमें कहा है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन सॉलिड. तो क्या पार्टिकल का मोशन होता है उसके अंदर? वाइब्रेटिंग. Particles So vibrations. On figure 4.2, draw at least 10 particles to show the arrangement of gases. तो वो हमने further apart बना देना. and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then क्या है? Describe the motion of particles in a gas. They are free free to move. to move and occupy space whatever available. Then उसने बोला है at the beginning of a lesson, student measures the mass of water in a shallow dish, shows the mass of water beginning of the lesson, figure to at the end of the lesson. The mass is reduced. We have Evaporation. to discuss the process. कौन सा process होता है? Evaporation, yeah. Evaporation. Evaporation लिखेंगे cause heat तो दे नहीं रहा है, Boiling करना होता है. तो evaporation ही होगा. Describe the process that decrease the mass of the water in a shallow dish. Use ideas about the particle. ठीक है? So The particles gain energy because of hmm, heat, so they move faster. so this is not the right color. Particles with enough kinetic energy leaves the surface and evaporate, decreasing the mass of liquid. फिर उसने कहा है figure shows a small box, small ice floating in a beaker. Ahmad, what is the answer to this one? A. State one way in which the way motion of the particle in ice differs from the motion of the particles in. Mani, would you like to give the answer? Ice versus water, can the motion of the particle कैसे differ करेगा? Okay. In water, they will move faster. Ice में only vibrations होंगे at fixed position, and water में they are free to move throughout the liquid. ठीक है? In ice, they vibrate at fixed position where they are free to move in liquid. Then energy is transferred from water to block of ice. State the name of the thermal process that transfers energy from water to ice. तो water to ice किसके through transfer होती है energy? Convection. Conduction, because ice is solid. Um, Okay? yeah. फिर उसने टेम्परेचर डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है? 18 डिग्री सी का. मास उसने हमें ये दिया हुआ है, एंड सी की वैल्यू ये है, तो E No is point equals in- to
MC delta theta 0.34 जैनब आप सुन रही है ना 4218 मतलब लग रही है आंसर 2.6 2 into point 10 raised to the power 4 joules units उसने मैंने दिया हुआ था. The temperature of water near the ice decreases first. Explain how convection causes temperature of all the water in the beaker to decrease. Particles convection में क्या होता है? Particle itself move करते हैं from their position and exchange their energy. तो the particles with high energy high heat energy would density of down ice They cause the cooler, denser water to increases sink. and colder water sinks and warm water comes to the top to replace cause उसने क्या कन्वेक्शन के टर्म्स है कन्वेक्शन करंट की टर्म्स में बात करो इससे हम लोग ये सब कुछ लिखना है ठीक है प्लेस इट मेकिंग यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट ठीक है in this way all of the temperature decreases. Let us state what happens to the internal energy of the water as temperature of the water decreases. हमने multiple time discuss किया था कि internal energy directly proportional होता है temperature के. So अगर temperature decrease कर रहा है, so is the internal energy. ठीक है? It would decrease and kinetic energy of the particle would reduce. Okay. How evaporation differs from boiling? First point. Evaporation happens at the surface Yeah. of liquid and it doesn't produce bubbles. And can I also say that it's natural? Natural तो दोनों ही हैं. और natural लिख दिया मैंने. And does not produce bubbles लिखना. Okay, and boiling's faster and it happens like throughout the liquid and not just at the surface. But I think so these क्योंकि उसने सिर्फ evaporation को differ करने को बोला हुआ है तो these 2 points are there. Good. Next. Temperature of the liquid is 160 Kelvin में find out करना है. How do we find it? Minus 160 plus 273. तो क्या आंसर आ जाएगा? 113 Kelvin. Acha ji, the container is made up of steel and there is vacuum between the inner and the outer walls. The outer walls of the container is at room temperature. State two methods of thermal energy transfer that a vacuum prevents. Vacuum क्या किन दो चीजों को prevent करता है? conduction and convection Convection. फिर है describe in terms of particles how a gas exert a pressure on the container. तो ये हमने बहुत दफा discuss किया हुआ है. Particles collide with the walls. Collide with the walls and exerts force per unit area. And also exchange momentum upon every collision. ठीक है? फिर है the particle shows stainless steel saucepan being heated on an electric cooker. The saucepan contains water. State what happens to the water particles as the water temperature increases.
happens with the water particles in the, उनकी kinetic energy क्या होगी, increase होगी, kinetic energy of the particle increases. We move fast. अब हमें मास कैलकुलेट करना है, उसमें हमें वॉल्यूम और वो उसने दिया हुआ है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 1000 एंड वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा 10 raised to the power -6, तो -6 एंड 3 उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, आर वी गेटिंग 0.25, हाँ बन ही जाएगा, जी Yes. बिकॉज ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 10 raised to the power -6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0.25 किलोग्राम हो जाएगा। फिर कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वाटर फ्रॉम 20 to 65, E इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, mc डेल्टा टी के, m Delta is T. 0.25 and c की वैल्यू इसमें दी हुई क्वेश्चन में हमें, हाँ 4200, एंड टेम्परेचर डिफरेंस कितना बन जाएगा, 20 - 65 कितना होता है, 45. 45, Yes. putting it, we're getting 4 7 1 2 3 47,000 joules, and we have the heaters supply enough power to heat the water in 39 seconds. A student measures the time taken to heat the water as 115 seconds. Suggest why the actual time taken to heat the water is longer. अब अगर longer time लग गया तो हम straight away किन points के ऊपर जाएंगे कि वो surrounding में भी energy transfer हो रही होगी, क्योंकि insulated तो है नहीं, the energy must be exchanging, I forgot the spelling, but it's exchanging. ठीक है? Exchanging to the surrounding. Next क्या है? The stainless steel saucepan is replaced with an aluminum saucepan of the same mass. It contains the same volume of water. The specific heat capacity of stainless steel is 500, whereas aluminum is 890. हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डायरेक्टली डिसाइड्स हाउ फास्टर एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू हीट अप और कूल डाउन, तो अगर उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है सो इट वुड टेक लॉन्गर टाइम टू हीट अप एंड कूल डाउन, तो पहला पॉइंट तो यही लिख देंगे हम, इट विल टेक longer to heat up and cool down. ओके, सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 2 मार्क्स है, मोर एनर्जी would be required to raise the temperature. फिर उसने डिस्कस किया हुआ है the shows two containers each filled with water, one is made up of metal and the other is made of non-metal. Explain how electron transfers thermal energy. So if we have metal, they have delocalized electrons, so They because move without. They transfer energy because without of moving. delocalized electrons, energy is exchanged faster in metals, and since metals are better conductor of heat, so transfer of energy is faster.
The outer surface of a non-metal container is much cooler than the outer surface of the metal container. Explain why a non-metal conducts thermal energy less well than a metal. Because energy is only transferred through vibration, which is a slow process. ठीक है? No free electrons. Explain in terms of particles why gases are poor thermal of conductor. Because gases Particles are far away are from each other. much further apart from each other, due to which less cooling would occur, resulting in less transfer of thermal energy.